Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, today's topic is 13.9 Applications of Electrostatics. And where is electrostatics being used? Number one, static electricity has an important place in our everyday lives, which include photocopying. In photocopying machine, the principle of electrostatics is used. In car painting, in extracting dust from dirty carpets, and from cleaning chimneys of industrial machinery, etc. So it is used in almost every walk of life, in photocopying, in car painting, in cleaning dust, and in cleaning the chimneys. Now we come to one of the applications of electrostatics, in which electrostatic air cleaner is used. And this is a device which is used in the homes to clean the air of dust and of pollen. Some people are allergic to pollen, and because of pollen they develop a kind of breathing problem, and similarly dust can also cause them breathing problems. So in order to have clean air for them, or to give them clean air, this small device, electrostatic air cleaner, is used. What is it? It is used in homes to clean air from dust and pollen to relieve allergy sufferers. Pollen is made from these trees and plants and flowers. Air mixed with dust and pollen enters the device across a positively charged mesh. So this is the device. This is the mesh. Mesh means jali hai ye. And this is the inlet of air. यहाँ से हवा आती है अंदर. It is sucked in by this device, electrostatic air cleaner. It sucks in air from here. In front of it is a mesh, एक जाली होती है, which is positively charged. So that gives the particles positive charge when they come in contact with mesh. तो जो हवा यहाँ से आ रही है, उसमें जो dust particles हैं और जो pollen है, they touch this and get positively charged. Then they pass through a second negatively charged mesh. फिर इसके बाद वो दूसरे second एक और mesh उस जाली लगी होती है उसके around, जिसके अंदर negative charge होता है. And then they pass through a second negatively charged mesh. And when they pass through it, the electrostatic forces of attraction between positively charged particles of air and negatively charged mesh cause the particles to precipitate. अब ये positive charged particles अंदर गए हैं, उसके बाद negatively charged particles हैं, वो दोनों negatively positively charged particles हैं, वो दूसरी negative charged mesh के ऊपर चिपक जाएंगे और इस पर भी चिपक जाएंगे कुछ. So negatively charged will get attracted here and the positively be attracted here. So in this way the air gets cleaned because of all the particles and pollen that is present over there. It gets stuck, it gets precipitated onto the mesh, and that is how the air that goes out of the outlet, that becomes clean. So I'll tell you again, the applications of electrostatics are many. They are in photocopying machine, they are in car painting, they are in cleaning dust from the carpets, they are used in cleaning chimneys, and they are also used to clean air of a certain room in your homes. That device which is used in homes is known as electrostatic air cleaner. Electrostatic air cleaner क्या होता है? वो electrostatic air cleaner जैसा इसका नाम है, electrostatic के principle से, जिसमें कि positive और negative attract करते हैं, negative repel करते हैं. इसमें इस तरीके से electrostatic principle use होता है, और उसके use करने से जो है ना वो हवा को साफ करता है. करता क्या है? इसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज जाली होती है, यहाँ से हवा दाखिल होती है, पॉजिटिव चार्ज जाली होती है. जाली को जब हवा और उसको टच करती है, उसमें से जितना भी डस्ट है वो इन कांटेक्ट आने की वजह से और पॉलन आने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है. फिर इसको नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स में से गुजारते हैं. जब नेगेटिवली चार्ज जाली में से या मैश में से गुजारा जाता है तो वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है. नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से दोनों में अट्रैक्शन होती है, इस तरीके से उसके साथ चिपक जाता है. इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड ऑन टू द सर्फेस ऑफ
मैश, और इस तरीके से वो जितनी भी हवा गुजर रही है और यहाँ से खारिज हो जाती है उसमें से डस्ट और पॉलन को रिमूव कर दिया जाता है. दिस इज़ द प्रिंसिपल एंड द वर्किंग एंड ऑफ कोर्स द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर. द नेक्स्ट thing that is also one of the applications of electrostatics is the electrostatic powder painting. यानी गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर जो पेंट करते हैं उसमें भी एक प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है. ये कैसे इस्तेमाल होता है? द बॉडी ऑफ कार इज चार्ज्ड एंड देन द पेंट इज गिवन ऑपोजिट चार्ज बाय चार्जिंग द नोजल ऑफ द स्प्रे. ये गाड़ी है, गाड़ी को एक ख़ास कमरे में डाल दी जाता है. उस कमरे के अंदर इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं. सो व्हेन द बॉडी ऑफ द कार इज पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे नोजल है जो पेंट करने वाले बंदे के पास होती है जिसे वो स्प्रे करता है, इसको नेगेटिवली चार्ज कर देता है. सो व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ पेंट जब वो उसमें से खारिज होता है नोजल में से तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो नेगेटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ पेंट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनकी रिपल्शन से वो रिपल्शन की वजह से वो फैल जाते हैं और इस तरीके से कार के ऑल राउंड वो इट गेट्स फॉर्म्स अ काइंड ऑफ अ मिस्ट एंड गेट्स स्प्रेड आउट. I will tell you again, the body of the automobile and manufacturers use static electricity to paint cars. कैसे करते हैं? The body of car is charged, body of car को charge करते हैं and then the paint is given opposite, और paint को opposite charge दे देते हैं. Due to mutual repulsion, the charged paint comes out of the nozzle from a forms of fine mist and are evenly distributed on the surface of car. तो इस तरीके से जो यहाँ से नेगेटिवली चार्ज पेंट निकलता है उसमें तमाम पार्टिकल्स ऑफ पेंट के नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस तरीके सारे के सारे इसमें हवा के अंदर वो फैल जाते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके. और फिर ये चूँकि नेगेटिव होता है पेंट, ये पॉजिटिव होता है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं. इस तरह कार की बॉडी की ऑल राउंड वो एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन से, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से इसके ऊपर पेंट आके लग जाता है और ठंडा होने के बाद आफ्टर सम टाइम इट स्टिक्स ऑन टू द बॉडी ऑफ द कार एंड इन दिस वे अ वेरी फाइन लेयर ऑफ पेंट इज डिपॉजिटेड ऑन द कार बॉडी. और जो कि ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, इसमें किसी किस्म का पेंट ये नहीं है किसी जगह पर ज़्यादा लगा किसी जगह पर कम लगा. एंड आफ्टर ड्राइंग द सर्फेस ऑफ कार हैज़ अ स्मूथ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पेंट विच इज़ इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव. ये दो इसके जो है ना, आई हैव डिस्कस्ड दीज टू applications of electrostatics. Now I will repeat again, recapitulate. One, application of electrostatics. Static electricity has an important place in our everyday life. For example, in photocopying machine में भी यूज़ होती है, in car painting, in extracting dust from dirty carpets, इन चिमनीज को भी साफ़ करने के लिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो कि आम घर में आप रखते हैं इसको और उसको स्विच ऑन कर दें तो आपके कमरे के जो हवा है उसमें से डस्ट को निकाल देता है और पॉलन निकालते हैं. इस तरीके से जो पेशेंट्स वहाँ पे जो एलर्जिक होते हैं डस्ट से, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, इफ़ दे आर इनसाइड तो उनका हवा को साफ़ कर देते हैं बाय रिमूविंग द डस्ट फ्रॉम द एयर एंड बाय रिमूविंग द पॉलन. प्रिंसिपल क्या है इसका? एयर इज लेट इन फ्रॉम हेयर. इसके आगे सामने एक जाली होती है, उस जाली को पॉजिटिवली चार्ज देते हैं. सो पार्टिकल जब इसके साथ हवा के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल गुजरते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स स्टिक करते हैं और वो उनको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है. देन इट पासिस थ्रू नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दूसरी जाली लगाई होती है और फिर यहाँ से खारिज. तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं. सो तमाम के तमाम डस्ट पार्टिकल वो जो है ना चिपक जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सरफेस ऑफ द मैश के ऊपर. और थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन रिमूव ए हाई परसेंटेज ऑफ कंटेमिनेंट्स फ्रॉम देयर. और इस तरीके से हम एक बड़ी हाई परसेंटेज ऑफ जो उसमें कंटेमिनेंट्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए. दूसरा तरीका जो है एप्लीकेशन इसकी है वो दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग में क्या होता है? गाड़ी को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं. मिसाल के तौर पे उस एक ख़ास सा कमरा पेंट रूम बना होता है, उसमें खड़ी करके पॉजिटिव चार्ज देते हैं बॉडी को. नोज़ल के ज़रिए पेंट जो स्प्रे किया जा रहा है उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया. ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पेंट के पार्टिकल्स जो है रिपेल करते हैं. इस तरीके से सारी जगह अमूदी फेंक जाते हैं. फैल जाने के बाद जो है ना ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं, इसके ऊपर पेंट की डिपॉजिट निकल आती है एंड दैट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. इट इज़ एन एफिशिएंट सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम. I repeat again, automobile manufacturers use static electricity to paint cars. How does it do it? The body of car is charged and then the paint is given opposite charge by charging the nozzle of the spray. Due to mutual repulsion, the charged
paint coming out of the nozzle form a fine mist and are evenly distributed on the surface of card. 3. The charged paint is attracted to the card being oppositely charged and stick onto it. After drying, the surface of the card has a smooth, evenly distributed paint which is economical and effective. तो ये हमने इसकी applications पढ़ी हैं. Now we will go on to the next topic. Please make notes of it and ask me if you have a difficulty. Thank you.